Hello students, I'm Himani Sharma, your educator. I warmly welcome you all on our YouTube platform, where we in today's video are going to discuss another important poet for your UGC NET English Literature paper 2, right? So who are we going to talk about? We are going to talk about Henry Louis Vivian Derozio, right? He was one such person जो ब्रिटिश लोग के टाइम पे थे and he was an Anglo-Indian. What do we mean by him being an Anglo-Indian? Being Anglo-Indian means that he was English in her, in his ways of thinking as well as his themes, the themes, the things that he talks about in her, works, etc. We see that they are much and more Indian in their nature, right? So let's move forward and see his picture here. He was born in the year 1809 and passed away in the year 1831. At a very young age, he passed away. He was born in Kolkata, Bengal Presidency, and passed away also in Kolkata only, right? So, some important factual details that we all need to be acquainted with, क्योंकि हम लोग नेट की प्रिपरेशन करते हैं तो हम लोग को थोड़ी सी factual details पता होना बहुत important होता है. His full name is Henry Louis Vivian Derozio, right? He was a Portuguese, Indian and English descent. So he was not just one person जो इंडिया से belong कर रहे हैं, English तरीके से सोच रहे हैं, लिख रहे हैं, but he was Portuguese in his descent as well. A poet as an assistant headmaster of Hindu College. Now when was Hindu College established? You guys need to tell me that right away in the comment section below, right? क्योंकि आपके paper 1 के लिए भी बहुत important year है. Influenced by Sadi and Byron, so these were people who were from the romantic age. ठीक है, Robert Sadi जो हैं, Lord Byron जो हैं, the way Byron presents his Byronic hero with the radical ideas that he has. So Henry Vivian Derozio जो थे, he was one such person who read these two people very ardently. बहुत अच्छे से पढ़ा था इन लोगों को and उनसे he took some influence, right? He was a radical thinker and one of the first Indian educators to disseminate Western learning and science among the young men of Bengal. And इसी वजह से आगे वाली स्लाइड में भी हम देखेंगे he was one such person जिन्होंने एक movement associate, जिस movement के साथ he is associated, उसको हम कहते हैं Young Bengal Movement, right? I think this question has also been asked in your UGC NET and also in your TGT courses. TGT या PGT में I think this question has been asked, like which movement Henry Derozio was associated with, right? He criticized the social practices and religious beliefs of the Orthodox Hinduism. He was not particularly against Hindus, but he was against the ideas जो Hinduism में Orthodox थे. सती प्रथा हो गई, बहुत सारी चीजें जो predominantly थी during the British people as well. ये उन ऑर्थोडॉक्स आइडियाज के अगेंस्ट थे, हिंदूज के अगेंस्ट नहीं थे, राइट? लेट मी मेक इट क्लियर टू यू ऑल. नाउ, irreverence by his students' orthodox Hindu parents, he was forced to resign by the directors of Hindu College in 1831. 1831 में ही इनकी डेथ हो जाएगी. 1831 में ही इनको हिंदू कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, रिजाइन करवा दिया जाएगा, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ही यूज्ड टू बी वन सच टीचर जो कि कन्वेंशनल मोड से नहीं पढ़ाते थे. ही वुड सिट विथ द स्टूडेंट्स एंड उनको रैडिकल थॉट्स के साथ चीजों को फिलोसफाइज करना, चीजों को सोचना, not from a point of view which is merely about religion but also about the radical thoughts. So he was one such writer who was very much progressive in it, in his thoughts. That's why ये young Bengal movement के साथ associated थे, जिसमें majority of the times we see that radical thinking को promote किया जाता था. Died of cholera 1831. We have seen that in the previous slides as well. Now coming to the poems that we have by Henry Derozio here, published in 1827, the poem's name is The Harp of India, right? और किस collection में publish हुई थी? Poems में. The harp in the poem is a symbol presenting the entire Indian civilization. Now before I jump on to directly talking about his poems, I will try to give you an idea कि Henry Derozio के works में हमें themes कैसी देखने के लिए मिलती हैं. He is one such writer, even if चाहे वो English descent से हैं, Portuguese descent से हैं, Indian descent से भी हैं, तो इनके works चाहे हमें predominantly English language में देखने के लिए मिलते हैं, but we also see that not just he is using the English language
as a source to reach to people, but his works, the lines जो हम आने वाली poems में पढ़ेंगे, it has Indianness. It has, because ये एक ऐसे writer थे who was a patriot, ठीक है, और अपनी country को लेके बहुत patriotic थे ये, बहुत patriotic थे, and that stance we see in his work, ठीक है, देशभक्त की तरह थी. Pitiable condition of India due to the Western impact, and the ending line suggests the rejuvenation again. Form क्या है? Sonnet. तो चाहे ये लोग English form use करके लिख रहे हैं, Indian writing in English नाम है क्योंकि हमारी इस unit का. So of course we see what is a sonnet? A sonnet is a 14 line poem. 14 लाइन की पोम होती है जिसकी जो लास्ट 2 लाइन्स होती हैं उनमें पोम का मेन आइडिया, मेन कंक्लूजन बताया गया होता है, मेन आइडिया बताया गया होता है, एंड बोथ द 2 लाइन जो एंड वाली होती हैं दे राइम विद वन अनदर. और इनको क्या कहते हैं? लास्ट 2 लाइन्स को बोला क्या जाता है? द लास्ट 2 लाइन्स आर नोन एज कपलेट. कपल है ना, क्योंकि एंड की 2 लाइन्स और राइम कर रही है साथ में, तो कपलेट बोला जाता है, ठीक है. तो इवन इफ ही वाज यूजिंग इंग्लिश फॉर्म, ठीक है, अपनी चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज, बट द वर्ड्स, द इमेजरी, द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू रीड, they are much and more Indian and patriotic in its nature. We also see that he tries to talk about कि हाँ Britishers ने how they have impacted Indian people in a negative manner. ठीक है, उनके आने से क्या खराबी हुई इंडियन कल्चर को, क्या लोगों को झेलना पड़ा because of the arrival of the Britishers. That is what he talks about, right? And ये कहते हैं rejuvenation, दोबारा से चीजें जो हैं वो सही हो जाए, rejuvenate हो जाए, right? He talks about that in the last line. So this is the poem here. Why hangst thou lonely on your withered bough, unstrung forever, must thou there remain? Thy music once was sweet, who hears it now? Why doth the breeze sigh over thee in vain? Silence hath bound thee with her fatal chain. Neglected, mute and desolate art thou, like ruined monument on a desert plain. Oh, many a hand more worthy far than mine, once thy harmonious chords to sweetness gave. He's talking about India, right? और उसके हाप की बात कर रहे हैं. And many a wreath for them that fame entwine of flowers still blooming on the minstrel's grave. Those hands are cold, but if thy notes divine, may be my mortal wakened once again. Harp of my country, let me strike thy string. Right? This is the poem in which he is trying to talk about, and यहाँ पे वो rejuvenation, वहाँ पे वो नए सिरे से चीजों को दोबारा शुरुआत करने की बात कर रहे हैं. That even if the British have left a negative thought process, a negative way of life for us, we need to make sure कि हम चीजें जो हैं उनको अपने तरीके से दोबारा शुरू करें, rejuvenate करें, right? The next is the Fakir of Jangira. ये भी आपका previous क्वेश्चन में match the following आया हुआ था, सिर्फ नाम पूछा गया था. Published in the year 1828. Full title is important. The Fakir of Jangira, a metrical tale and other poems. It's a long poem that consists of over 2000 lines. And we see जैसे रोमियो एंड जूलियट है हमारे शेक्सपियर के, हाउ दे आर स्टार क्लॉज लवर्स, इवन इफ मिल जाते हैं तो कुछ एंड नहीं हो पाता है दोनों का साथ में. उसी तरीके से ये इंडियन थीम के साथ, इंडियन नेम्स के साथ दिस पर्टिकुलर स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड 2 कैरेक्टर्स, फकीर एंड नलिनी. जो फकीर है ही इज रिप्रेजेंटिंग रोमियो एंड नलिनी इज रिप्रेजेंटिंग जूलियट. सो दैट इज व्हाट इज द मेन थीम. दैट्स अ लव पोम हियर. Then we have to India, my native land. ये भी 1828 में जंगीरा, द फकीर ऑफ जंगीरा वाले सेशन में ही, ठीक है, इट वाज अपलोडेड. एक्सटोल्स पेट्रियोटिज्म एंड अ लव फॉर फ्रीडम. इट टॉक्स अबाउट द सेंस ऑफ देशभक्ति और फ्रीडम, इंडिपेंडेंस जो ये लोग चाहते हैं फ्रॉम द ब्रिटिश पीपल, राइट? क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी हम लोग को इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी. 1831 में ही पास हुए, तो 1809 से 1809 से 1831 तक when he was writing things down, we see that at that point of time हम लोग को इंडिपेंडेंस नहीं मिला था. इवन द फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ 1857 भी नहीं फॉट किया गया था.
The poet laments the fact that India has been enslaved by the British and it desires to bring back her glory. यहाँ पे इंडिया की जो बात कर रहे हैं हेनरी डेरोजियो, he is not talking India, about India as a country, but he is personifying India. ये आप लोग के टर्म्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फ्रॉम नेट पर्सपेक्टिव, या कोई टीजीटी पीजीटी के पेपर्स भी आप देते हो तो भी. पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब आप किसी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन वाली एबिलिटीज दे देते हो. तो यहाँ पे व्हेन हेनरी डेरोजियो इज गोइंग टू टॉक टू इंडिया, ही इज गोइंग टू रेफर इट टू एज हर. इंडिया को हर कह के, लड़की की तरह ये अपनी कंट्री को, क्योंकि हम मदर इंडिया बोलते हैं यूजुअली, राइट? तो इट इज समथिंग व्हिच इज रेफर्ड टू एज हर in the entire poem, right? Talks to her in a monologue, expresses a sense of personal loss in the downfall of his country, India. कि ब्रिटिश लोग के आने की वजह से how the downfall of India has been brought. उन्होंने colonize कर लिया हमको, हमारी चीजें ले गए, right? The Kohinoor, the other things that we had, which made India सोने की चिड़िया back then. But now it has lost its glory. So here we have the poem. My country, in thy days of glory past, a beauteous halo circled round thy brow and worshipped as a deity thou wast. कि तुम एक भगवान की तरह पूजी जाती थी पुराने टाइम पे. इंडिया की बात कर रहे हैं. Where is thy glory? Where the reverence now? वो glory अब कहाँ गई? वो reverence, वो respect जो थी, वो अब कहाँ है? The eagle pinion is tuned down at last and groveling in the lowly art thou. Thy minstrel hath no wreath to weave for thee, save the sad story of thy misery. Well, let me dive into the depths of time and bring from out the ages that have rolled a few small fragments of these wrecks sublime, which human eye may never more behold, and let the guardian of my labor be, my fallen country, one kind wish for thee. He wants India to rise up again, start things again, and be away from the influence जो ब्रिटिश लोग छोड़ के जा चुके हैं, जो नेगेटिव इम्पैक्ट वो लोग ने हमारे ऊपर करा था, right? So this was his perspective that he tried to pen down in his poetry, right? We also see the sense of जो देश भक्ति, patriotism, that is clearly evident in these lines that we have just read, right? So इनके questions भी पूछे गए हैं. फकीर ऑफ जंगीरा भी previous year question था. So you need to make sure कि आप लोग को at least जो हार्प ऑफ इंडिया है, एटलीस्ट द पोम्स, द टाइटल्स यू आर मच मोर अक्वेंटेड विद, थोड़ा सा नाम पता होना इंपॉर्टेंट होता है, राइट? आई सी यू गाइज इन अनदर वीडियो. टिल देन कीप ऑन स्टडीइंग. थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे. बाय बाय.